Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. Today we are going to learn about tool making out of clay and today we are going to make hammer. So my dear students, हमने मुख्तलिफ clay के जो designs हैं, हमने डिफरेंट जो शेप्स हैं उनको डिज़ाइन करना सीखा और अब उन तमाम शेप्स के को हम कलेक्टिवली यूज़ करेंगे और हम मुख्तलिफ टूल्स जो हैं उनको डिज़ाइन करेंगे. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीकैप. सो क्विकली आंसर द क्वेश्चंस बाय पॉजिंग द वीडियो आफ्टर ईच क्वेश्चन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड कोन? Very good. Okay, how to make cylinder by Play-Doh? Very good. And what is prism? Excellent. Okay, my dear students. So now let's quickly move forward towards today's student learning outcome. So in today's lecture, all the students will be able to design hammer by using clay or Play-Doh. Okay, my dear students. So Play-Doh को use करते हुए किस तरीके से आप एक tool को design कर सकते हैं? We are going to learn that today. So let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that do you know what are tools? क्या आपको पता है tools क्या होते हैं? They are used in everyday life to ease our work. And what is the use of hammer? We can pull out a nail, we can insert a nail into the wall. So these are different uses of hammer. So my dear students, I request you all to please open page number 130 in your Science 4 books, chapter number 10. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. So tool making out of clay. The basic geometrical shapes that we have learned in previous section are used to make different objects of daily life. In the next step of craft making, we will learn to make various tools that are frequently used in everyday life. So as I already told you that हमने मुख्तलिफ geometrical shapes जो हैं वो learn करनी सीख ली हैं. आज हम उन्हीं shapes को collectively use करेंगे, बनाएंगे और हम design कर सकेंगे कोई भी tool. आज हम hammer design करना सीख रहे हैं. So hammer is used to apply sharp force on object. It is often used to insert an item into another. For example, a nail into a wall. So my dear students, ये use हो गए hammer के. इसके अलावा material हमें क्या चाहिए? Play-Doh, 2 different colors, knife and toothpicks. So procedure is following steps will be followed to make hammer out of the clay. So step number 1 is make a cylinder out of the clay using previously learned techniques. Make the edges smooth by tapping both at ends against a flat surface. So this is how you will make a cylinder with very flat ends. So my dear students, first of all what I will do is I will take out a piece of Play-Doh. Okay, I will turn it into a sphere and then what I will do is I will make a cylinder out of it. Okay, so roll it onto the table like this, then flatten out its ends like this, again roll it. So your handle of the hammer is all set. Okay, now we will move forward towards the next step. So the step number 2 says that make another small cylinder exactly of the same diameter as that of the cylinder. Remove the uneven ends using a knife. Make the edge a little bit round. Insert the cylinder on the flat end of the other cylinder using a toothpick. So my dear students, अब हमने क्या करना है? हमने एक और जो है छोटा सा cylinder बनाना है. So this time I will be using a black Play-Doh. ठीक है, different colored Play-Doh use करें आप. So अब मैं एक और सिलेंडर बनाऊंगी, small cylinder. ठीक है, sphere, then roll it and make a small cylinder जिसका diameter जो है वो बिल्कुल पहले वाले जितना जो है वो होना चाहिए, ना बड़ा ना उससे छोटा. ठीक है, इस तरीके से. अब आपने इसकी edges को बिल्कुल जो है वो sharpen out करना है और वो हम knife की मदद से करेंगे. Okay, a perfect cylinder is done. Okay, now what I will do is I will take out my cutter and this is how I will
make sharp edges of this cylinder. तो आपको शेप्स के बारे में भी इस तरीके से पता चल गया कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ टूथपिक, आई विल इंसर्ट इट इनटू द प्रीवियसली मेड सिलेंडर, और अब ये वाला जो सिलेंडर है मैं इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगी. सो यू कैन सी इट नाउ. बहुत ही नीट जो है ये बन गया है. ठीक है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप सेज दैट स्टेप नंबर 3, make a rectangle with soft edges and insert it into the cylinder. Fix it using a toothpick. So my dear students, अब मैं आपको साथ ही पिक्चर दिखाती हूँ कि आपको इस तरीके से एक और सिलेंडर जो है वो बनाना है. I will again take a black Play-Doh. Keep on looking at the picture, जिससे जो है आपको उसकी जो शेप है वो कंफर्म रहेगी. ठीक है. सो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्लेडो लेंगे और एक और जो है वो आपने सॉफ्ट एज जो है सफ़ेयर बनानी है, जिसकी जो एज है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज़ डन. अब मैं इसकी जो बेस है उसको मैंने इस तरीके से टैप करके फ्लैट कर दिया. एंड नाउ अगेन यूजिंग अ टूथपिक आई एम गोइंग टू प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ इट. ओके, ये देखें. सी. ओके, नाउ कीप लुकिंग एट द पिक्चर ताकि आपको लगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है. देखें, वैसा ही बन गया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, let's quickly read out the next step. So next step says that attach an other circular but loosely flat clay piece with one side of rectangle. Fix it using a toothpick. So my dear students, एक और rectangle अब हम बनाएंगे. ये देखें, पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है. इसी तरीके से I will take out a piece of Play-Doh and I will make a sapphire out of it, and then by tapping it from all sides I will make a, इसको हम हैमर की शेप दे रहे हैं ना. सो अगेन बाय इंसर्टिंग द टूथपिक मैं इधर इसको इस तरीके से अटैच कर दूँगी. ठीक है. ये देखिए, ये हैमर की वन साइड हो गई. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप सेज दैट टेक वन लास्ट पीस ऑफ द क्ले एंड शेप इट into a claw with two pointed edges. Make sure that the edges are pointed. Fold it half, attach it with the flat piece using a toothpick. So my dear students, अब इसका claw हमने दूसरी साइड पे बनाना है. I will take very small amount of Play-Doh now, और इसको जो है I will roll it against the table इस तरीके से, और इसको जो है हमने दो क्लॉज बनाने हैं. फर्स्ट आई विल टेक वन हाफ, एक हाफ में लूँगी और मैं उसको कीप ऑन लुकिंग एट द पिक्चर ताकि आपको जो एग्जैक्ट टूथपिक की मदद से ही इसको हम अटैच करेंगे. लाइक दिस. सो मैं अदर जो है उसको भी मैं अटैच कर देती हूँ. सो माई क्लॉ हैमर इज़ ऑल सेट एंड रेडी. इसके जो क्लॉज हैं उनको हम नीचे की तरफ पॉइंट कर देंगे. सो माई हैमर इज़ ऑल सेट. सी हाउ प्रिटी एंड नाइस इट लुक्स. बिल्कुल रियल लग रहा है ना, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा. इट्स जस्ट अ मॉडल. सो आई विल प्लेस इट हेयर सो यू कैन हैव अ क्लियर लुक ऑफ इट. Okay, done. Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards the next part.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, फोल्ड द क्लॉज डाउनवर्ड. आपको इसके क्लॉज को प्रॉपरली डाउनवर्ड जो है वो फोल्ड करना है ताकि जो है आपका क्लॉ हैमर बिल्कुल रियल लगे. द क्लॉ हैमर इज रेडी. मेरा भी क्लॉ हैमर रेडी हो गया है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन मेक योर ओन क्लॉ हैमर. So I hope everybody has done it now. So now let's quickly move forward towards the next part. So my dear students, guide the students. Teachers जो हैं वो students को guide करेंगी कि वो various colored clay के लें ताकि वो different parts जो हैं hammer के properly show कर सके. जैसे कि मैंने show किया, आप देख सकते हैं कि मैंने black and red clay जो है वो use की है ताकि इसका handle और इसका upper portion जो है वो properly view हो जाए. Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards the evaluation. So quickly tell me how to make Play-Doh hammer. हम किस तरीके से Play-Doh hammer बना सकते हैं? By inserting and making various shapes like cube, rectangle, sphere. We can make a claw hammer. Okay, my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video. Write down your name and the roll number and then start doing the worksheet. So what are tools? You have to tell that. What is the use of hammer? Hammer का क्या use है? You can take help from the book. How to make hammer from Play-Doh? किस तरीके से आप Play-Doh से hammer बना सकते हैं? Follow all the steps that are given in the book and the homework. So you will do question number 3 from section B given on page number 140 and you will also make the model of the hammer at your home. Practice it. जिस तरीके से अभी हमने बनाया है इसी को आपने घर में Play-Doh से प्रैक्टिस करना है. इसके अलावा आपने प्रोजेक्ट जो है घर में बनाना है विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 131. इसी से रिलेटेड है. आप हैमर जो है ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं बनाना. नाउ मेक डिफरेंट स्क्रू ड्राइवर्स टू मेक योर क्ले टूल सेट. प्रेजेंट योर टूल सेट इन द क्लास. डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ ईच टूल एज वेल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने मुख्तलिफ तरह के टूल्स जो हैं हैमर के अलावा लाइक स्क्रू ड्राइवर और रेंच और प्लास आपने इनको Play-Doh को यूज़ करते हुए इनको डिज़ाइन करना है. आप एक बॉक्स में इनको रखिएगा एंड नेक्स्ट प्रेजेंट इट इन योर क्लास. और हर टूल का आपको यूज़ भी बताना है कि इसको किस लिए यूज़ किया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ Play-Doh की जो शेप्स हैं उनको मोल्ड करके एक हैमर जो है हमने डिज़ाइन किया. आई होप एवरीबडी हैज़ एंजॉयड मेकिंग दैट. Keep everybody around you safe and keep practicing all the crafts. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.